All right. So, welcome to the episode of where we react to the Champions League and the Europa League week that went by. So, all the football fans, welcome to the podcast where we, the fans, talk about football from the stats. See you after the intro. All right, what a week of football it was. मतलब right from the start, where we predicted last week कि Bayern और Paris का मैच जो होने वाला है, it's gonna be a really interesting one to see. और ऐसा ही हुआ, and what we predicted eventually was right because Bayern won the game 1-0 और PSG was I think all right. Things could have been worse because the first half for Bayern was little dull, or PSG were all right. I mean, they were not exactly, illuminating the whole stage, but जो भी था, it was decent. The only goal that came from Kingsley Coman, who has been a former PSG player himself, so emotions were high. Overall, in that match, Paris का जो पूरा demeanor था towards the game was a little on the lower side. मतलब lower side ऐसे बोला जाए तो मतलब कैसे समझाऊँ, थोड़ा सा वो urgency कम दिख रही थी, right? And then in the second half where Bayern started to feel the pressure कि मतलब first half में Paris was actually doing pretty well without even Mbappe coming up, and Paris was really looking like a good team who can score any minute, but ऐसा हुआ नहीं unfortunately. But then it's only a 1-0 lead, and now that all the away goal rules are stricken off, so कुछ भी हो सकता है. The next leg is in Bavaria, Bayern, और उनके घर में let's see what gonna happen. Yeah, but I really think कि इस बार भी Bayern is gonna come out on top because Neymar last day I think is recording कि ठीक एक दिन पहले he has injured himself. It was feared कि ये fracture हो सकता है, but all in good hope and faith, ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just an ankle sprain. Mbappe looks to be back. Messi is at his brilliant best. मतलब वो बंदा कभी खराब हुआ भी है. I think हाँ हुआ है. Barcelona lost 8-2 with Bayern. So I'm sorry. I mean, it's not a personal joke. It's just a joke that I have to make क्योंकि nobody is perfect in this football world. Are they? No ना. बस इसीलिए ठीक है. And now moving on to the second match that we had was, I think it was Milan versus Spurs. Again, same result. Milan won the game 1-0. Spurs के लिए थोड़ा बुरा नहीं लगता. I mean, it's just थोड़ा अजीब है सब कुछ for them. The defense is all right. Christian Romero actually gives all that he has. Attack में Son, Kane, they work someday they don't. तो ये जो पूरा combination है for Spurs, I think it's been a really weird season for them अभी तक, क्योंकि कभी randomly ये लोग चल जाते हैं, कभी और एकदम कभी टीम काम ही नहीं करती है. It's like टीम है but टीम की तरह दिखते नहीं है ये लोग. So that cohesion between defending your goal and scoring a goal, for Spurs, it's a really big concern this season. I think Antonio Conte as well. There have been a lot of rumors that there has been rift between the Spurs top officials and Conte, and the report says कि शायद अगले साल Conte will not continue as Spurs manager. So देखने की बात ये है कि Spurs का होता क्या है इस season. Will they even qualify for the Champions League or not? Because जैसा दिख रहा है, they can anyway go out in the Champions League by the next leg, क्योंकि एक पैर तो ऐसे ही नीचे है पानी में और दूसरा पैर देखते क्या कर पाते हैं. वैसे for Milan it was really a good win for them because क्योंकि prior to this they were also having a roller coaster of emotions and fixtures as well. तो यहाँ पे जीतने के बाद that has really come up to them, and they have been performing really well in the last match as well. So overall, the 1-0 game was justified. I also thought that the game could be a draw क्योंकि जिस हिसाब से दोनों टीम came into the match,
0-0 मुझे ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा था, बट देन मिलान का एक्सक्यूज मी फॉर दैट, मिलान का होम गेम था एंड दे वन. सो द नेक्स्ट लेग इज गोना बी इन लंदन. फ़र्क पड़ने वाला है इस बात का. इट्स नॉट डिनाइंग कि होम गेम्स और अवे गेम्स कितना ज़्यादा मेंटली फ़र्क पड़ाते हैं एक टीम पे. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. आई मीन whoever goes through, it's for the best, right? And the next match, the noticeable match was between Dortmund and Chelsea. So that match, मतलब मैं क्या बोलूँ उस मैच के बारे में. Chelsea has spent over 300 millions. Not for the fact कि ये टीम काम नहीं कर रही है. It's just that they need time to come up together as a team. क्योंकि there are a lot of new people, lot of young blood. Everything coming together does take time, right? And it's too much to ask from Potter to deliver on the first day itself. Mudrik के बारे में बोलना चाहूँगा. I think Chelsea has been robbed. The only one game where he made his debut against Liverpool, he was electrifying. He terrified Trent. और मिलनर के साथ भी उसने काफ़ी टॉयल किया था. But since then, Mudrik has just been a lost cause. There was a very brilliant chance that was given to Mudrik. I think the ball was directly played from the defense by Thiago Silva. Or it was very good ball, juicy ball right on the legs, but the first touch of Mudrik let him down. अगर वो ball control हो जाती, then it would have been a definite goal. And bad luck भी है थोड़ा, because in the first half, Joao Felix really came close to scoring a goal, but footwork let him down. And let's talk about goals. That were the only goal, in fact, that was there in that match was scored by Karim Adeyemi, who is supposedly the replacement for Erling Haaland. ना स्टेचर मिलता है, ना साइज मिलता है, ना पेस मिलता है. सो अर्लिंग हालैंड फॉर हिज हाइट हैज़ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पेस. आई डोंट नो कहाँ से आता है इतने लंबे टांगों होने के बाद भी. इज लाइक दैट गाय रन्स एंड रन्स एंड रन्स. बट करीम आडियामी इज a different animal altogether. He's not that tall, he's not that strong as a striker should be. Not nowhere in compared to Erling Haaland at least. But yet, he took the ball from the midfield. Enzo Fernandez was with him, track कर रहा था. He toiled with him. पहले तो देखा कि हाँ भाई तू क्या कर सकता है, you are 100 million guy. I'm gonna take you for a ride. That's what he said. फिर ड्रिबल करके पास्ट, फिजिकली भी outran him and scored a goal past the keeper. So excuse me. Overall, the biggest difference was the mentality in that game. Chelsea बहुत कोशिश किया to come up with a solution for that goal. There was eventually a brawl as well between Dortmund and Chelsea. किसी officials had said something or the other. But जो भी है, overall the point is कि Dortmund has come up with the lead for the next leg. It's an advantage definitely. The away goal rules are not there. होता भी तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता because it's a home win. It was a home win for Dortmund, right? And Chelsea on the other hand also lost their game in the weekend against Southampton. So all I can say is that Potter के दिन काफ़ी limited है. So Potter has to leave. And the only thing is कौन आएगा? Who's the next guy to replace him? I mean, the question would be going around Chelsea boardroom for a long time. If not Potter, if not this guy that we are having right now, जिसको हमने पोच करके लाया from Brighton, who's having one of the best seasons of their history in the club, in the top flight, and now he's doing this with Chelsea. So Chelsea is 10 points away from the top and 11 points away from the relegation zone. So situation is very dire, जैसा you can see. So I don't think Chelsea has that amount of mental strength to cope up with the pressure जो भी अभी चल रहा है. They need to have someone who can actually guide them through इस पूरे के पूरे turbulent time में से. They need to have a better manager. I don't know. I'm sorry, Graham Potter. I don't know that much about you, and I have not played football at that level to say इतना कुछ तुम्हारे बारे में, आपके बारे में. But the point is, it's not working out, is it? It's just my opinion. So
Moving on, the another match that was there in the Champions League was between Club Brugge and Benfica. Benfica came out winning 3-0 in that match. The only thing उस पूरे match में was good about Club Brugge was Noah Lang. He's a left winger from Netherlands. He was electric. He was electric, and I think he has a summer move coming. इस summer तो कुछ ना कुछ पक्का होने वाला है because the way he's been performing has been exceptional. Even against Atletico when they were in the group stages, Atletico was haunted by Noah Lang, to be honest. And yeah, so basically 3-0 हो गया है. It's a very big lead, and I don't think Benfica is going to give it away from what we have seen in the recent past. भले कितने भी लोग वो बेचते, they still have the right amount of players to get them through, at least for this round. Yeah. And again, all right, while all this was happening, there was another match that took place. Sorry for that again. Between the league leaders of Premier League, Arsenal, and the second place Manchester City. Oh my God, what a match that was! But the point is that कि मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो एडवर्सिटीज काफ़ी हेड ऑन लेती है इन द प्रीमियर लीग, राइट? सो वो एक मीम दिख रहा होगा ना कि फक इट वी आर मैनचेस्टर सिटी, व्हाट्स द ग्रेटेस्ट दिस मोमेंट. सो आई थिंक लास्ट ईयर ही था जब चैंपियंस लीग में दे वर नियरली क्वालिफाइड एंड देन मैड्रिड डिसाइड टू मेक अ कमबैक, और वहाँ से जस्ट थिंग्स वेंट हेवायर. आई थिंक रॉड्रिगो स्कोर्ड 2 goals इन दैट मैच. जो भी है, but this match was really different gravy for Manchester City. They were pushing hard for the league. They were pushing mentally at Arsenal कि भाई तुम्हारे लिए ये सब नया है, हमारे लिए ये सब रोज का काम है ना? तुम अभी अभी फर्स्ट पे आए हो. We have been doing this consistently for years, at least in England, ठीक है? And that showed. That actually showed. Arsenal were nervous, to say the least. काफ़ी ज़्यादा ऐसे पासेस दिए गए जो फॉर नो रीज़न अपने आप को काफ़ी एक ऐसे सिचुएशंस में ले आए थे आर्सेनल काफ़ी बार फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम द बैक कि दे गॉट स्टक एंड एक्चुअली द गोल वाज कंसीडर्ड. इवन द फर्स्ट गोल, द टॉमियासू बैक पास, वो इट्स क्वाइट हॉरेंडस. बट आई जस्ट कांट ब्लेम आर्सेनल बिकॉज इट्स अ न्यू टीम. ऑल द यंग क्रॉप ऑफ brilliant players are playing together, and जो भी था, whatever they have been doing this season is been totally commendable. And also for the fact that Arsenal lost 3-1, they made up mentally in the next match against Aston Villa, जो कि इस weekend हुआ. So they were down 1-0 in I think the first 5 minutes, और फिर उसके बाद they made a comeback 20 मिनट के अंदर 1-1. They again went down 2-1 sorry, and then come back. फिर उसके बाद एक lucky moment of Jorginho where it was brilliantly hit, but Emi Martinez से लग के the goal was given, and obviously the last moment where Martinelli ran straight into Aston Villa's goal. So 4-2 overall. Arsenal had a great time this weekend mentally as well for all the boys that were playing. कि yes, we have that metal in us, we can go through and actually win the Premier League towards the end after the 38 games are finished. And on the other hand, Manchester City lost. No, they didn't lose. They drew against Nottingham Forest 1-1. So before this match ke Arsenal had one game in hand and Manchester City were in lead. But after this game week, Arsenal are again on top. So ant bala to sab bala, right? And also the mentally the वो जो इतना बढ़िया वो लगान वाला वाइब आया ना कि मतलब हाँ भुवन लगान माफ करा देगा, ऐसा एकदम इतना बढ़िया मोमेंट था कि आई थिंक दिस इज गोना पुश देम फॉर द प्रीमियर लीग दिस सीजन. देख सकते हैं, देखने को तो हम सब लोग बैठे ही हैं क्या होता है क्या नहीं होता है. And that was Premier League. I don't know where I came to Premier League. It's a real segue, Premier League. अचानक से बातों में आ जाता है and you just start talking about it. Anyway, coming back to last week matches, another Premier League team was involved in the second competition of Europa League, and it was Barcelona against Manchester United in Barcelona. And what a match! ये
it's not justified, you know. 10 साल पहले की बात है, these two teams were actually playing in the Champions League final against each other, और आज देखो ये लोग यूरोपा लीग के नॉकआउट में भिड़ रहे हैं just to stay alive in the Europa League. This is just horrendous for where they have fallen to. But ठीक है, we won't complain there. Their own demises have taken them there. Let's not go into it. It's a whole different topic for an episode. तो बात ये है ओवरऑल कि जो मैच बार्सिलोना में खेला गया है बिटवीन दीज टू क्लब्स, ओह हो, आई मीन रैशवर्ड को यार क्या बोला जाए. रैशवर्ड हैज़ बीन इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. ये तो मतलब अंडरस्टेटमेंट हो गया है. बंदा ड्रिबल करके इतना कड़क राइट फुट है उस बंदे का ना, ही जस्ट शूट्स एंड ही नोज दैट ही इज गोना स्कोर. इनफैक्ट इन द लास्ट मैच अगेंस्ट लेस्टर जो इस वीक हुआ, रैशवर्ड वाज ऑन फायर. रैशवर्ड के पास बॉल आते ही डिफेंडर्स आर एक्चुअली टेरिफाइड ऑफ हिम, विच इज़ अ रेयर सीन टू सी इन अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर. आखिरी बार आई थिंक ऐसा कभी हुआ था तो आई थिंक इट वाज रोनाल्डो हु डिड इट, जो एक्चुअली डिफेंसेस में टेरिफिकेशन लाता था कि हाँ भाई, ओह शिट, इट्स प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो गाइस. So Rashford जो भी है is doing the same thing again, and Ronaldo complained that the facilities are the same, the gym is the same. Ronaldo bhai, Rashford is doing all of these in the same facility that you were doing 10-15 years down the line. But nothing to take away from Ronaldo. He's the greatest footballer of, not the greatest, but one of the greatest to ever feature in this game. So वापस आते हैं इस यूरोपा लीग के फिक्चर पे. Barcelona opened the scoring from a corner thanks to Marcos Alonso, who dedicated his goal to his late father, who just passed away last week. Or if you actually go on to the internet and search Marcos Alonso father, तो एक तो नाम भी सेम आना है और दूसरा शक्ल भी सेम आनी है. They were so identical to each other. नहीं यकीन होता आप गूगल करके देख लो, फिर मुझे आके बताना कि हाँ भाई मतलब दीज आर लाइक आइडेंटिकल ट्विंस बोर्न इन डिफरेंट जनरेशंस. एनीवे, मूविंग फर्दर, बार्सिलोना के गोल लगते ही 10 मिनट के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड इक्वलाइज थैंक्स टू यू नो हु, मार्कस रैशफोर्ड. अकेले ड्रिबल करके इट वाज 1-on-1. Ter Stegen was on his post and Ter Stegen has been in a good form इस सीजन. काफ़ी क्लीन शीट्स रखे हुए हैं. बार्सिलोना वर राइडिंग हाई ऑन एड्रेनलिन उस समय, एंड नियर पोस्ट पे ही शॉट ए रॉकेट और वो बच नहीं पाया बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज मार्कस रैशफोर्ड ऑन हिज राइट फुट. ठीक है, सो 1-1. एंड देन गोइंग ऑन अगले 10-15 मिनट में इट वाज अगेन रैशफोर्ड्स ट्रिकरी that fooled Rafinha, और एक should I, it is given an own goal, but अगर वहाँ पे कुंडे नहीं होता तो it would still have been a goal. वो बात अलग है कि वो ऑफसाइड होता, but the whole setup for that goal was brilliantly done by Marcus Rashford. Barcelona उसके बाद was seen struggling for confidence on the pitch, थोड़ी सी misplaces, and then Pedri got injured. Gavi was given the yellow card which makes him suspended for the next match. So एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा mental dilemma से वो लोग डील कर रहे थे on the pitch. So but then adversity, Barcelona also you have to get the credit कि बहुत कुछ हुआ है उनके साथ भी in the recent past, and they actually fought back. Even they don't have Dembele, Lewandowski is not in a good form. मतलब it's a mini drought कह सकते हैं लेवेंडोस्की के स्टैंडर्ड से, बिकॉज ही इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की आफ्टर ऑल, राइट. तो उस बार्सिलोना वाज स्ट्रगलिंग. रफीनिया बेंट इन अ सुपर्ब क्रॉस विच एक्चुअली डिफ्लेक्टेड एवरीवन, सबके नज़र के पार वो सीधा सीधा गोल में चला गया. देयर वाज लेवेंडोस्की, देयर वाज फरान, देयर वाज डे गया, सब लोग सिर्फ वो बॉल को देखते हुए जा सके. सो दैट्स द कैपेसिटी, दैट्स द यूनिकनेस रफीनिया ब्रिंग्स टू बार्सिलोना, जो शायद डेम्बेले नहीं लाता है, बिकॉज डेम्बेले इज मोर ऑफ अ प्लेयर हु टेक्स ऑन प्लेयर 1-on-1, बीट्स देम, ह्यूमिलिएट्स देम, और फिर शूट्स द बॉल समवेयर एल्स. फिर फर्क नहीं पड़ता उस भाई को. ये हवा में जाए, प्लेयर के पास जाए, ही डिड हिज जॉब. एनीवे, so match is poised 2-2, and even last night there was a match of Barcelona against Cadiz and they won the game 2-0. और कल के मैच में Ferran Torres was in a good form. I mean that's a rare thing to say and do, and
Fati was given his chances. He wasn't that मतलब इतना हाइप थी उस बंदे के अराउंड, बट वो इंजरीज के बाद थिंग्स हैव नॉट रियली बीन द सेम फॉर दिस गाय अगेन. बट देन यू शुडंट गिव अप, राइट? बार्सिलोना इज ऑल्सो नॉट गिविंग अप. दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट. और Fati did all right. Lewandowski scored a goal kal, and which ended his mini drought. So overall, Manchester United won 3-0 against Leicester. Uh, Barcelona won 2-0 against Cadiz. So this Thursday, the match will be on Old Trafford, and Old Trafford has been a fortress for Manchester United this season. I mean, they have conceded goals, but the whole feeling, the whole camaraderie of all the fans is coming together. And also news broke out this week ki there is a bid on the table for Manchester United from a Qatari sheikh for 5 billion euros. They are excited. The good times for Manchester United, I think, for the fans is just up there. So one of my good friends, he called me and said कि भाई तुमको पता नहीं है, अभी अभी कतर का वो बिड आया है, फेब्रिज़ियो रोमानो का पोस्ट देखो. एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब प्रोसेस को होने में अभी कुछ नहीं तो 1 से 1.5 साल निकल ही जाना है, ठीक है? एंड देन तुम पैसा फेंक ही दोगे. सो द होल चैम्पियंस लीग विल कम इनटू ओनली प्रीमियर लीग, एंड दैट्स व्हाई द सुपर लीग कम्स इन. मतलब इफ़ यू लिसन टू मी एंड सेइंग कि सुपर लीग के बारे में क्यों बात कर रहा है, चौथिया है क्या, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड्स. द पॉइंट इज कि इफ़ यू इंजेक्ट सो मच कैश इन वन लीग, बाकी सारे लोगों के पास अपने आप कुछ नहीं बचता है टू स्पेंड, टू इवन बीइंग अफ्लोट. बाकी सारे लीग्स का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से ला लीगा हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. इवन बार्सिलोना वर अबाउट टू गो बैंकरप्ट. मतलब बार्सिलोना जैसे क्लब के साथ ये हाल हो रहा है. सेविया was struggling this season. सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं except Real Madrid for whatever reasons. In fact, in Serie A, there is such a big historical support in that league. सारे बड़े क्लब्स हैं, 5-6 क्लब्स हैं. It can, if money is actually injected into Serie A, it could rival Premier League for a time. But it is what it is. Serie A had its own days जब वहाँ पे सारे प्लेयर्स जाते थे, and Premier League was just another league. सो बात ऐसी है कि पैसे जा रहे हैं उधर. अदर क्लब्स ऑल्सो वांट टू अर्न मनी. मतलब वो लोग सिर्फ ऐसे प्रीमियर लीग देखने के लिए नहीं आए हैं. सो आई डू थिंक सुपर लीग इज इन एक्चुअलिटी एक पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म हो जाए, एंड दीज क्लब्स ओनली माइट पार्टिसिपेट. बिकॉज प्रीमियर लीग को छोड़ के बाकी सारे क्लब्स तो आर एक्चुअली ईगर कि हाँ भाई हो जाए, पैसे आए, वी कैन स्टे अफ्लोट, ये बदनामी से बचे. एनीवे, that's what I think about. So let's coming up to the matches that it's gonna be this week. So it's Liverpool versus Real Madrid. Big juicy tie. Matlab, what a match. On papers at least. Liverpool won their last match against Newcastle, and Real Madrid demolished Elche 4-0. बट रियल मैड्रिड के पास भी अपने उनके खुद की इंजरी लिस्ट है, एंड लिवरपूल के पास भी खुद का इंजरी लिस्ट है. बट ऑल्सो दे हैव नॉट बीन डूइंग डिफेंसिवली गुड दिस सीजन. हिस्ट्री हैज़ बीन प्रूफ जर्गन क्लॉप के अंदर कि जब भी लिवरपूल्स डिफेंस हैव नॉट शोन अप, दे हैव स्ट्रगल्ड थ्रू आउट द सीजन. आई थिंक जब फर्स्ट 2020 right the season after जब they lifted the Premier League, they struggled a lot. एंड रियल मैड्रिड के साथ ऐसा है कि दे आर ए डिफरेंट मॉन्स्टर्स इन चैम्पियंस लीग. अभी हम कुछ भी बोल लें, वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों को कुछ हो जाता है. एंड वी जस्ट कांट अकाउंट ऑन हिस्टोरिकल डेटा और अभी रिसेंट फॉर्म के हिसाब से कि रियल मैड्रिड कैसे परफॉर्म कर सकती है. इट्स जस्ट अनप्रिडिक्टेबल. रियल मैड्रिड एंड चैम्पियंस लीग आर जस्ट लाइक अ ग्रेट लव स्टोरी. Apart from that, Darwin Nunez is injured, so Liverpool will be missing a striker. But then Firmino is back, Jota is back, Diaz is on the way back, but I don't think he'll be available this week. Is Matchday के लिए. So Gakpo is actually scoring, so which is a good thing for Liverpool. Salah has been all right. He's not back to his old Salah वाला एकदम situation. I think he's missing Mane और साला बोलने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छे लगते थे दोनों साथ में. Whatever is happening, Liverpool might struggle again.
एंड द सेम डे एक और मैच है फ्रैंकफर्ट वर्सेस नेपोली. नेपोली हैज बीन इन टेरिफिक फॉर्म दिस सीजन एंड आई डू थिंक दिस गोना बी अ वन साइडेड गेम. बट कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज फ्रैंकफर्ट एक्चुअली वन देयर वे थ्रू द यूरोपा लीग लास्ट सीजन डिफीटिंग बार्सिलोना एंड ऑल्सो इन द फाइनल दे वर टेरिफिक. तो कुछ भी नहीं कह सकते अभी, बट आई डू थिंक Napoli has the upper hand. And then on Wednesday, the matches are between Leipzig and City. Uh, we all know kind of how it's gonna end like. So let's not even discuss further about it. So Leipzig or City, miss, I think we can actually discuss the scoreline. City would go through the first leg advantage of 2-0. 2-0 minimum. Yeah, agree. नहीं एग्री होता है तो टेल मी अबाउट इट. यू कैन कम टू ऑन इंस्टाग्राम ऑन एट द रेट फ्रॉम द स्टैंड्स. टेल मी अबाउट इट एंड वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट एपिसोड. और नेक्स्ट मैच इज बिटवीन इंटर एंड पोर्टो. सो यू एक्चुअली कैन प्रोडिक्ट व्हाट्स पोर्टो इज प्लेइंग लाइक, क्योंकि हमको वो मैच देखते ही नहीं है उनका, राइट. इट्स जस्ट चैम्पियंस लीग जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओह पोर्टो हैज़ बीन डूइंग गुड. एंड इंटर के साथ क्या है कि इंटर हैज़ नॉट बीन डूइंग प्रोलिफिकली वेल, but they have been winning the games 1-0, 2-0 ऐसे ही, बट लाइन के पार पहुंच जा रहे हैं. एंड आई थिंक कि इस गेम में भी यही होने वाला है. It's either going to be a 1-0 or max to max a 2-0 game. So that would conclude the first leg of round of 16, and also the second leg of Europa is coming up. So Manchester United versus Barcelona will happen in Old Trafford. और यूरोपा लीग में there are other teams as well. जैसे Juventus actually lost the game, I think. I can't remember it properly. So Juventus have a match, Roma has a match. सबकी सब काफ़ी अचानक से important हो गया है यूरोपा लीग. Maybe because these giants have been there, so थोड़ा सा ध्यान उधर चला जाता है. But Europa League has also been really good last 2 seasons से. Let's hope कि we could get great teams coming out to the next round. Alright, so this will be it for this episode, guys. Wherever you find कि कमी रह गई episode में, you can come to Instagram on the page of Football FT Stands, DM us, comment on the posts.